Hello, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. How are Good you? Good morning, morning, ma'am. ma'am. Fine, ma'am. How was your weekend? Good, ma'am. Good. And Only good. about you? Yes, We are meeting after 2 days. Only good. sleeping. मैम एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन हो गया ना इसलिए गुड मैम. Oh wow, that's so good. Ankit is so happy. So Ankit, are you coming to Delhi now? नो मैम मेरे फ्रेंड्स गए हुए थे वहां पे. Okay. Okay, no worries. आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 3 सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक आईएलटीएस स्पीकिंग के. Any guesses? Any guess? Traveling? I'll मैम check in the फ्री outcome. टाइम स्पोर्ट्स अगर हॉबीज आप इन टॉपिक्स पर नेचुरली बोलना सीख गए तो आइल स्पीकिंग पार्ट 1 का जो कॉन्फिडेंस है ना वो डबल हो जाएगा आपका. सीरियसली आई एम टेलिंग यू. तो मैं आपसे सुपर इजी कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, आपको जल्दी से उनका आंसर देना. ठीक है? एंड Okay. यू हैव टू राइट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. व्हाट्स योर फेवरेट मूवी और वेब सीरीज? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज. व्हाट्स योर फेवरेट मूवी और वेब सीरीज? मैम मार्शियन. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning, Aryan. You have to type. जल्दी से आंसर Um, दो ओके मैम. ताकि. we have to write a developed answer or just No, you just need to give me a one-word answer. That what's your favorite movie or web series? Second question. Do you like playing sports or watching sports? Do you like playing sports or watching sports? So you can type play, watch, or both. Let me see किसकी क्या liking है. Hmm? Third question for you is how many photos? Done with the second one? yes. How many photos do you have on your phone? Less than 500, around 1000, or more than 5000? Let me see. Less than 500, around 1000, or more than 5000? So you have to select the options A, B, or C. Which one? Good. Some of you have 1000 photos. Oh, Sakshi is having more than 5000. साक्षी इतना सारा स्टोरेज. Harshit, just asking about the photos. How many photos do you have on your phone? Meanwhile, write the Less answer than can have 500, around 1000, or more than 5000? Asifa, uh 11,000 plus. फोन की स्टोरेज ना. इट मस्ट बी क्राइम. इतनी सारी फोटोज. कैसे ही है? कुशल हैज मैम झूठ बोल 18,000 मैम photos. इसमें से ना आधे से मैम इसमें से यस आधे से मैम. ज्यादा झूठ बोल. It's स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं but you need to be true. गैलरी का. True. Asifa is saying, यस. Kushal, do you really have 18,000 photos in your phone? यस मैम रियली. Oh my God. Casually I just sent 500 but really is 18,000. Oh. all you guys are using a device. Okay. अच्छा, I can honestly ask you एक a बात question. बताओ. How many of you feel nervous जब आपसे कोई भी एग्जामिनर ऐसे एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ ले? Do you really feel मैम nervous or you feel confident? I used to feel nervous, but
I still feel nervous, like if I haven't practiced it before the test. Oh. Because of So I really want to know who feel nervous or who feel that no, I'm confident now. Ma'am, actually there is no use if we feel nervous. That's the reason I repeat the question. That's it, with confidence. Okay. I want to see मैम more क्वेश्चन answers. Mm-hmm. मैम जब क्वेश्चन ही पूछता है तब वो कंफ्यूज नहीं होते, तब कॉन्फिडेंटली मैं रहती हूँ, लेकिन जब आंसर मेरे माइंड में होता है, मैं देख पाती, तब मैं ना कॉन्फिडेंस मेरा शेक हो जाता है. Okay. कोई unexpected question आ जाए. Yes, Aryan, that's really good. You're confident now. Why too nervous? Exactly. क्योंकि देखो हम कैसे आंसर करने वाले हैं अपने पार्ट 1 के क्वेश्चंस को नेचुरली विदाउट मेमोराइजिंग एनी आंसर. यू नो दैट गोल्डन रूल, यू नो दैट स्ट्रैटेजी. वो सिंपल फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है इन पार्ट 1 ऑफ योर स्पीकिंग. कोई भी क्वेश्चन आ जाए पार्ट 1 का, यू विल ऑलवेज बी आंसरिंग विद दैट फॉर्मूला. और वो कौन सा फॉर्मूला है? आंसर प्लस रीजन प्लस एग्जांपल. Yes, you have to answer directly. First statement should always be answering the question directly. Second will always be explaining. You have to tell the examiner why. Examiner ने कोई भी आपसे question पूछा है, like suppose my question was, the first question I asked is, what's your favorite movie or web series? No doubt I asked you to answer in a one word, but when it comes to talking about स्पीकिंग पार्ट 1, तब आप कैसे आंसर करोगे इसे? आप बताओगे आपकी फेवरेट मूवी, बट व्हाई ऑल्सो. दिस इज अ हिडन क्वेश्चन. ये एग्जामिनर के क्वेश्चन में ये हिडन पार्ट होता है. व्हाई? व्हाट्स योर फेवरेट मूवी? आपको सिंपली वन वर्ड या वन सेंटेंस में कभी भी ये आंसर नहीं देना कि आपकी फेवरेट मूवी ये है. You have to expand, you have to develop your answer, which is always with why. Reason जो हम सेकेंड स्टेटमेंट में डेवलप करते हैं कि क्यों हमें वो मूवी पसंद है. कोई तो रीजन होगा ना हमारी लाइकिंग का. एंड द थर्ड सेंटेंस विल ऑलवेज बी एन एक्स्ट्रा डिटेल टू इट और सम एग्जाम्पल टू इट. सो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है जो आपके आंसर्स को एक्सटेंड कर देती है नेचुरल वे में. इसमें आपको कुछ लर्न नहीं करना पड़ता, कुछ मेमोराइज नहीं करना कि आपको यही स्टेटमेंट बोलनी है. नो, कोई मेमोराइज आंसर नहीं है. इट्स अ नेचुरल वे टू एक्सपैंड योर आंसर विच हेल्प्स यू टू साउंड लाइक अ बैंड 7 or 8 कैंडिडेट. ठीक है? सो आर यू रेडी ऑल to boost your fluency today? yes. Are you ready? यस. Yes, Let's ma'am. start with the first topic. आज हम सबसे पहला टॉपिक करने वाले हैं एंटरटेनमेंट का. Okay, yes, Absolutely. Sakshi, do you have any query, dear? क्वेश्चन में अगर ऑप्टेन वर्ड आता है तो मतलब उसको आंसर कैसे दे? Obtain word. Sorry, Sakshi. मतलब ऑप्टेन वर्ड आता है. ऑप्टेन Often. मैंने टेस्ट कल दिया था तो उसमें ऑप्टेन वर्ड आया था, तो उसका Okay. मतलब I आंसर think कैसे? she says often. Wait. Often, ma'am. I got it. I got it. ठीक है. So you are asking what is the meaning of it or how to How to apply answer that there. word. Sorry. हाँ, how to हाँ, answer that देखो question. ऑप्शन का मतलब होता क्या? इट मीन्स फ्रीक्वेंटली, बहुत बार. So I often watch movies on weekend. Often means I regularly, I frequently, मैं बहुत बार मूवी देखता हूँ वीकेंड में. ठीक है? ऑफ्टन का मतलब बार बार. Got it, Sakshi? Yes, ma'am. Okay, great. So let's start with our first topic, entertainment. I really want all the students who are always on mute, please start raising your hand so that I can ask you a question. Okay? Let's start from Tanvi first. Tanvi? And there is a background noise. Yeah, please everyone mute yourself.
Yes. Tanvi, are you there? Inder? Yes, Navi? Navi? You raised your hand. Am Yes, Kirat. Question for you. Okay. Kirat, what do you do for entertainment? As I'm a very alive person for entertainment, I prefer to go to walk or play some extreme sports. Usually I play cricket or rugby with my friends on weekends. Other than that, when I'm by myself, I prefer watching movies because it helps me to broaden my horizon on different topics. And that's the source of entertainment for me. Yes, good. Well spoken. Next one. Asifa. Asifa, do you like watching movies? Yes. Uh, I really like watching movies, especially comedy movies. When I watch comedy movies, these movies, I feel much pleasure and delightful. Why there is a pause, I think Asifa? it's the best way. मैम You took आइडियाज a long की चेन pause. ब्रेक हो गई थी. You took a long pause. Start again. I really like watching movies. When I watch comedy movies, I feel much pleasure and become delightful. It's I think it's very best entertaining mood. I can stay at home, lay in bed on a sofa and watching movies and eating snacks. But there are errors, Asifa. And I told you na that you should not start with the same question. Do you like watching? I really like watching movies. No. Try to paraphrase, and it's not required that you should always speak the same question. आप copy कर रहे हो. You can simply talk about it in a different way. I'm quite fond of watching movies. I think they are a great source of entertainment. Okay, ठीक है? Yes, Kushil? right. Yes, ma'am. What kind of movies do you like? I really fascinate about amusement music. Sorry, ma'am. I really fond with amusement movies and also scientific movies as it helps me to uplift my mood and also avoid burnouts. Although it takes my time, even it helps me to gain more knowledge through watching those experimental movies. Whenever I have a free time, I usually prefer to watch all kind of movies at that time. It helps me to build my content and also refresh my mood. You in the beginning you talked about uplift my mood. Then in the end also you talked about to refresh my mood. And in the beginning you And said to watching. So that was a wrong grammatical error. When you're it speaking in helps a me flow, to you're making errors. Please work on this. Okay. okay. So there's a repetition. You talked about uplift my mood, that is good. But again, if you're speaking the same sentence, it's a repetition. ठीक है? Yes, ma'am. I usually want to use refresh my mind, but instantly I use mood Yes. like that. Next is Aryan. Yes, ma'am. Aryan, do you prefer watching movies at home or in cinema? Yeah, so it depends person to person, but I prefer to watch movies on cinema because the we can experience high visuals and the quality of sound
For instance, last time I went to a cinema where I watched a movie related to space. So I felt the visuals, the VFX, and the sound effect. Although most of the people don't have time, so I think we should watch movies in cinemas. Sorry, Aryan, your answer is not exactly what I spoke about. I'm asking, do you prefer? And you're talking about in respect of all the people, we, a person to person. Here, you need not to talk in a general way. आपको सोसाइटी और लोगों के बारे में बात नहीं करनी, आपको सिर्फ अपना पर्सनल बताना है that what do you prefer. ठीक है? Okay, ma'am. So you Okay, use ma'am. we can, it's not allowed. You have to talk about only I. Okay, I ma'am. prefer watching movies at cinema or at home. जो भी आपका चॉइस है. ठीक है? Okay, ma'am. Anam, Yes, ma'am. Anam, do you prefer watching TV or using your phone for entertainment? To be honest, I like to use a mobile phone for entertainment because all the times it is very easy for me to watch any types of the movie or some entertainment topics related to my choice. For example, at the time of evenings when I have a layer to open the mobile phone and watch my favorite serials on YouTube channel. So most of the times I really love to use the mobile phone as compared to it is very easy for me as compared to the TV. Anam, repetition हो रहा है. First sentence, last sentence same है, and you have a habit of adding s. Times, examples, types, सब में s add कर देते हो. ठीक है? ये नहीं करना. I often Next. watch YouTube videos और on YouTube I often watch my serials और जो भी आपके daily episodes हैं. तो Yes, इसके लिए आपको ये बोलने की नीड नहीं है. I open my phone. Yes, ma'am. ठीक है? ठीक है. हर्षित. Good morning, ma'am. Good morning. Did you have different entertainment options as a child? Yes, of course. When I was a child, I used to play cricket with my cousins and my siblings. But often in the afternoon, we also watch TV together, like some movies and WWE. So yeah, I have different choices in my childhood. ठीक है. थोड़ा सा फ्लुएंसी पे वर्क करो हर्षित. जब आइडिया जनरेशन करते हो ना तब समझ नहीं आता कि क्या बोलना है ना? सो जब Yes, आपसे एज अ चाइल्ड पूछा जा रहा है, यू कैन टेक 2-3 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स का भी पॉज लेके आप अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हो. डिड यू हैव ma'am. डिफरेंट एंटरटेनमेंट ऑप्शन एज अ चाइल्ड? सो दैट मीन्स अभी कब की बात कर रहे हैं? आपके पास की बात कर रहे हैं जब आप चाइल्ड थे. माई एंटरटेनमेंट ऑप्शंस वर क्वाइट डिफरेंट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. बैक देन, आप 5 फ्रेजेस यहां पर यूज करो. आई एम राइटिंग ऑल्सो. जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो यहाँ पे यूज करो, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट योर चाइल्डहुड. Back then, we did not rely on mobile phones. We used to play the outdoor activities. पहले उसे explain करो, फिर उसे example में add करो कि for instance, I used to play or I usually played outdoor games like cricket or so, जो भी आपकी थी. Then you can even mention कि कौन कौन से दिन पे, like suppose during the weekends only you play. ठीक है? थोड़ा सा एक्सपेंशन. पहले हमेशा क्या प्रैक्टिस करनी है? अगर आइडिया शॉर्ट है उसमें और डिटेल डालेंगे तो वो आइडिया एक्सपैंड हो जाता है. Okay, ma'am. यस. इंदर. मैम. यस मैम. वेयर हैव यू गॉन? सॉरी मैम, थोड़ा काम था. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, डू यू थिंक एंटरटेनमेंट इज इम्पोर्टेंट?
Yes, definitely. Entertainment is very important in our life because it's relax our mind after busy hectic schedule, and we can enjoy uh, entertainment. We can enjoy movies with the family, and we can spend time, quality time with the friends and family also. It allow us to spend quality time with our loved ones. It also help us to maintain our good, or we can say mental well-being. Okay. Okay, now let's talk about the another topic. Who is left now? Sakshi? Yes, ma'am. Please mute yourself. Rest of the people, mute yourself. हम म्यूट ही है. No, not you, Sakshi, the another person I'm talking about. Sakshi, do you like sports? Sakshi, you have to speak. Yes, yes, ma'am. बताओ. I love to watching a sport, cricket, badminton, tennis, but mostly I want to play with my friends. Badminton, and when I was in child, that time I play Ludo, caroms, chess, this kind of the indoor and outdoor game. I really like to play. Can you speak one more time your answer? My voice not audible, ma'am? No, it is, but I really want to hear one more time. Can you speak once? Yes, ma'am. I I really like it sports, watching cricket, tennis, and chess. This kind of the sport I also play when I was child with my friends. Ludo, cricket, badminton, and like outdoor games. No, Sakshi. फ्लुएंसी बिल्कुल भी नहीं आ रही है. यू आर टेकिंग अ वेरी लॉन्ग पॉजेज इन बिटवीन और आइडियाज भी डेवलप नहीं है. फर्स्टली यू आर Madam, मेंशनिंग आई रियल. यस, हु वाज स्पीकिंग? ma'am, the examiner don't mind if you we cannot telling a lie also. They asking, do you like sports? If यस, we cannot say एग्जैक्टली. anything. No, I don't like यस, sports much. एग्जैक्टली. यू कैन. देखो, एग्जामिनर को आपकी, Yeah, they don't know you personally. They are yeah, just checking your speaking ability, that are you able to speak at a length according to the four speaking parameters or not. जो आप बोल रहे हो उस बोलने में क्या आपकी फ्लुएंसी है, कोहेरेंस है, ग्रामेटिकल एरर है, वोकैबुलरी कैसी है, आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है. आपको झूठ बोलना है, आप झूठ बोलो, नो मैटर. yeah, बट आप वो yes. बोल कैसे रहे हो, वो आपकी स्पीकिंग स्किल को देख रहे हैं. ठीक है. मोस्टली स्टूडेंट मैम ये लोग सोच लेते हैं कि जैसे उन्होंने पूछा डू यू लाइक, तो हम लोग लाइक ही बताना है, It's डिसलाइक नहीं okay. You बताना. can talk about फिर वो not आइडिया नहीं also. आता है. I don't like Yes, sports. You can speak about it. yeah, ठीक है. thank you. Inder, can you give an answer of not liking sports? Yes. Hmm. I don't like much sports because I don't have time nowadays. I am busy with my work. So when just I twice in the month I have time, so I just play volleyball with my friends. That's it. फ्रेंड्स के बाद देखो, इंटोनेशन ऐसा था दैट यू वांट टू स्पीक समथिंग मोर बट देन यू स्टॉप. सो ऐसा रॉन्ग इंटोनेशन नहीं आना चाहिए. अब नॉट लाइकिंग है, यू कैन सिंपली से आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ स्पोर्ट्स. आई एम नॉट रियली इनटू Okay. स्पोर्ट्स. ठीक है. स्पोर्ट्स हैव नेवर बीन वन ऑफ माय इंटरेस्ट. आप कैसे भी रिफ्रेस कर सकते हो. इट्स अप टू यू. सो यू नीड टू बी प्रो इन दिस स्किल, कि आपको ये स्किल आ जाए. Instead of just Okay. copying the same question, do you like sports? I do not like sport. आप क्या करोगे, इसे फ्रेज करोगे. ठीक है.
बिकॉज Yes, ma'am. अगर आप फ्रेज करोगे ओनली देन यू आर स्पीकिंग अबाउट बैंड 7 लेवल. जो 6 वाले स्टूडेंट है वो सब कॉपी करते हैं और यही सेम सेंटेंस बोलते हैं, आई डू नॉट लाइक स्पोर्ट. बट जो 7 वाला कैंडिडेट होगा वो हमेशा इसे रिफ्रेज करेगा, क्योंकि उसी के पास ये कैपेबिलिटी है ना कि वो उसे पैराफ्रेजिंग पता है. Yes. Right? So I'm not really into sports. I'm not a big fan of sports. Okay? Or you can say that sports have never been one of my interests. या आप किसी भी फ्रेज, ये वाले जो फ्रेजेस हैं ये आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो जब भी आपकी लाइकिंग और नॉट लाइकिंग की बात हो. अयान, Yes, ma'am. Ayan, question for you. Do you prefer watching or playing sports? Ma'am, it generally depends on the situation. Most of the time, I prefer to play sports because I think it's a, physical activity that helps a person to stay fit mentally and physically. But sometimes when I feel stressed, I prefer to, because I think it's the best way to lift up mood. Speak again your entire answer. Ma'am, it generally depends on the situation. Most of the time, I prefer to play sports because I find it's more interesting, and I think it's a good way to stay fit mentally as well as physically. But sometimes I think watching movies is also necessary because it helps a person to be in a family, because most of the people prefer to watch their movies, or uh, they prefer to watch televisions when they are surrounded by a family. But the question was not about watching movies. It was about watching sports. Oh, ma'am, it's watching sports. Yes, that is why I told you to just repeat your answer. Because I thought Yeah, I misheard you. Yeah. You ma'am. talked about, in the beginning it was good, but then you talked about watching movies. So that is Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. the I thought que- that it was watching moment, ma'am. the question is, so you have to be an active listener also here. Speaking Yes, ma'am. में examiner can repeat the question if you ask her again. But the thing is, if you are answering it in a wrong way, वो wrong ही count होगा. ठीक है? So the answer Yes, will ma'am. not counted as relevant answer. Manisha, Yes. how often do you play sports? Actually, nowadays, because of a busy schedule, I play once in a month. And my favorite sport is a badminton. I play with my friends because of a busy schedule. We have to arrange time, and it is very hard nowadays. Now, Manisha, you already talked about your busy schedule in the very beginning. That's why you mentioned once in a month. And then again, you talked about in the last sentence, busy schedule. Yeah, it is Am I right? hard now. So it will be Yeah. counted as अगेन रेपिटेशन. आपने 2 या 3 सेंटेंस बोले और उसमें से 2 सेंटेंस अगर रिपीट हो जाएंगे, दैट मीन्स यू आर नॉट डेवलपिंग योर आंसर. ठीक है? सो आई डोंट प्ले स्पोर्ट्स वेरी ऑफन. आई यूजली प्ले बैडमिंटन अबाउट वंस अ मंथ. तो इसमें इन 2 सेंटेंस में आपने क्या करा? फर्स्ट आंसर आपने दिया, बताया कि यू डोंट प्ले इट वेरी फ्रीक्वेंटली. आप क्या प्ले करते हो? बैडमिंटन प्ले करते हो अबाउट वंस अ मंथ. Then you can talk about it. फिर आप explanation दो कि my work, it keeps me quite busy. So it's very difficult to play regularly. ठीक है? So, however, I always enjoy playing badminton. Whenever I get a chance, I do it or I perform it as a good form of exercise. फिर आप एग्जाम्पल और देना है तो और एग्जाम्पल ऐड करो. ठीक है? Okay, ma'am. Yes. Elora, Yes, did you play sports as a child? I I play sports as in my childhood time with my cousins, football, and I like to teach.
देखो एलोरा, आप पास्ट की बात कर रहे हो, कैन नॉट से प्लेज, यू हैव टू यूज प्लेड, पास्ट टेंस, Yes, ma'am. है ना? Yeah. ट्राई अगेन, स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. I played football with I played football during my childhood time with my cousins. I like more football. यस, गो अहेड. फुटबॉल Teacher, खेलना पसंद है. द मेन रीजन इज because it was an exciting, or it helped me to stay active. okay, teacher. Teacher, can I Yes, you can uh, try one more time. Yes, please. um I like played football because it's my favorite game. I mostly played with my cousins, and it help me to stay active and energetic. अब देखो, आपने आई लाइक प्लेड कर दिया, आई लाइक टू प्ले होगा. ठीक है? Okay. सो प्लीज आप अपने टेंसेस पे वर्क करो. Yes, खुशी, ma'am. मैडम Yes, मैडम ma'am. एक क्वेश्चन दो बच्चों से पूछा करिए, क्योंकि फिर भी उनको पता आइडिया आता कि नहीं, बाद में भी एक थोड़ा देखा गया. ओके, Okay, teacher. खुशी. Yes, ma'am. अच्छा, खुशी का टर्न तो, अच्छा खुशी का नहीं हुआ. ओके खुशी, व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट? Uh, my favorite sport is badminton. I enjoy it because it fast-paced, exciting, and keeps me physically fit. And it also improves my concentration, coordination, and reflexes. For instance, I usually play badminton with my friends on weekends, which helps me relax, reduce my stress, and stay active. Good. Nice. Who is left now? Who raised the hand? Sakshi. Sakshi, will you try one more time? Yes, ma'am. Okay. Now I really want you to be little more energetic when you speak. ठीक है? Do you prefer team sports or individual sports? Uh, yes, I mostly prefer a team sport. They allow to work with others, make a friends, and team Can I team try? sports. My favorite team sport is cricket, Indian cricket team. Uh, however, I watch the watching TV on TV. Cricket. It's really feel relaxed because I prefer watching cricket on TV. To watch, watching, then watch, फिर उसके बाद सेंटेंस ओवर करके फिर से watching cricket on TV. बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं साक्षी. Why is it happening? You need a lot of practice for speaking. Yes, Kirat, the same question for you. Do you prefer team sports or individual sports? Yes. Do you prefer team sports or individual sports? Um, I'm just thinking like how should I start? Um,
First sentence should be always the direct answer. I definitely prefer team sport, or I Okay. definitely. Hmm. Okay. Yeah, I definitely love sports, which in which like I could indulge with the other team members. As even in the earlier question, I mentioned like I prefer like playing rugby, which is a team sport because it helps me to develop my communication skills. Other than that, like when you play in a team, like you develop the team spirit and you know like how to deal with the different situations in the life because there are like some certain situations like where you have to deal with the people and you know how to like regulate emotions and communicate that emotions while being in a stressful situation. So when I play team sports, that helps me to develop all of that skills. So I think that's the reason like why I love playing team sports. ठीक है किरत, बट जो लास्ट सेंटेंस बोला वो नहीं बोलने की नीड है, बिकॉज यू ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. आपने बता दिया कि Okay. क्या क्या स्किल्स आपकी डेवलप हो रही है व्हेन यू आर प्लेइंग द टीम स्पोर्ट्स. ठीक है, Okay. गुड. नेक्स्ट इज Japsimrit. Good morning, ma'am. Good morning. How are you? Fine, ma'am. Is this your first class? Yes, ma'am. Yes, I have seen your name for the very first time. Okay, so now I'm going to ask you a question. After this, who is left? Is sports important in your life? Yes, it is. Sports help maintain physical fitness and provide entertainment and relaxation. But it's a two-sentence answer. You need to add more detail. Okay, ma'am. Try one more time. Yes, it is. Sport helps maintain physical fitness and provide entertainment and relaxation. So, sport is very important in my life. आगे एग्जाम्पल बताओ, कब खेलते हो? If it is very important, you must be engaged in this. Kushi, can you answer the same question? Ma'am, can I repeat? Yes, yes. Speak. Yes, sport is important in my life. It helps me stay healthy, active, and stress free. Even though I don't play sports regularly, I enjoy watching cricket and badminton, and I believe sports are beneficial for both physical and mental health. Okay. So you can talk about maintaining a healthy lifestyle here. You can also talk about physical activeness here. You can talk about improving overall well-being. यहाँ तो आप बहुत सारी vocabulary का use कर सकते हो. Okay? Okay, Now, ma'am. Harshita, why are you on mute today? Even not raising the hand. Sorry, ma'am. I really want the students who do participate every day, they should raise their hands themselves. I need not to even call them. Okay, ma'am. Otherwise, you guys will be lack of the practicing part ना. फिर AI पे ही practice करनी पड़ेगी और कोई option नहीं है आपके पास. ठीक है? Yes, ma'am. Question Okay. for you, Harshita. Do you like taking photos? Being girl, you must be. Being girl, absolutely, I love to taking photos because because it because हर्षिता I दोबारा से स्टार्ट करो और बिकॉज को रिप्लेस करो. okay, absolutely, I love to taking photos. आई लव टू टेकिंग नहीं होता हर्षिता, आई लव टू टेक होता है, या फिर आप आई लव टेकिंग बोलो. Okay, I love taking photos because I फिर uh, बिकॉज आ गया. sorry, मैम, फिर बिकॉज की जगह पे क्या रिप्लेस कर आज दूं? करो. द मेन रीजन इज आपको कितने सारे मैंने फ्रेजेस बताए, नहीं तो वही बिकॉज पे ही अटके रह जाओगे. Okay. 7 टारगेट बिल्कुल भी नहीं होगा अगर हर क्वेश्चन में ऐसे ही आंसर दोगे बिकॉज. ठीक है,
मैम एज का यूज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, एज कर सकते हो। ठीक है. Absolutely, I love to take photos as we know that this is the एज वी नो क्यों? सबको क्यों साथ में लेके चल रहे हो? आपका अपना पर्सनल राउंड है, आई की बात करो। as मैम मतलब इसको कैसे बोलेंगे कि मतलब मेमोरीज क्रिएट होती हैं. As I think photography is a wonderful way to capture different moments, memorable moments. Start again. Absolutely, I love to take photos as it seems to create a good memories of our life. As it is a wonderful way to capture good moments, नहीं memorable moments. हम Memorable vocabulary पे ये moments good of bad life. वाले words नहीं use करेंगे. Yes. Looking back at the old photos can also bring back those happy memories. For example, whenever I travel or spend time with my family, I make sure to take plenty of pictures so that I can remember those moments. Yes, जो ma'am. आप करते हो real life में, you have to just speak about it. I absolutely enjoy taking photos. है ना? I absolutely enjoy taking photos as create beautiful memories, lifetime memories. Mm-hmm. So I'm just getting some Also, when vocabulary here for Mhm. photography. ठीक है? Okay, ma'am. As I told you that every day I'll be giving you some vocabulary you can use according to the different topics. Mazu, question for you. Yes, ma'am. What do you usually take photos of? Uh, I usually take a photo. Sorry, ma'am, I can. मजू देखो, क्वेश्चन है कि आप फोटोज किसकी लेते हो. सम टाइम वी टेक फोटोज ऑफ आवर सेल्फ, आवर फ्रेंड्स, आवर फैमिली. सम टाइम वी आर अ पर्सन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ नेचर, ट्रैवलिंग. सम पीपल दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ ओनली सेल्फीज. कुछ भी आपकी अटेंशन को जो कैच करे, एनीथिंग इंटरेस्टिंग. Yes. सो फर्स्ट I use. स्टेटमेंट शुड बी डायरेक्ट. ओके. Oh, yes, I usually take photo of my family and natures. I like keeping happy memories and beautiful view. For example, I often take picture of sunsets and flower and family and celebration. थोड़ा सा मिक्स हो गया. आपने नेचर्स बोला था, नेचर्स नहीं होता, नेचर होता है. ठीक है. एंड ब्यूटिफुल प्लेसेस आप बोल सकते हो. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द वोकैबुलरी, थोड़ा आप उसका यूज भी कर सकते थे. आपने जब बोला पहले, तो यू कैन टॉक अबाउट आई लव कैप्चरिंग सीनिक व्यूज लाइक सनसेट, सनराइज. ठीक है. Okay. मोर ओवर, वेन एवर आई विजिट अ हिल स्टेशन और अ पार्क, आई टेक पिक्चर्स ऑफ द लैंडस्केप. देन आप अपनी फैमिली का भी बोलना चाहते हो. आई ऑफन टेक पिक्चर्स ऑफ माई फैमिली on that hill station. So I enjoy capturing those happy moments, memorable moments. I cherish those memories. अभी जो मैंने vocab लिखी है, इसका यूज भी तो करना है ना हमें. अप्लाई भी तो करेंगे इसे. Hmm. Yes. मोहम्मद अबू. Can you? Muhammad Abu Bakr. Yes, ma'am. Yes, please. Yes. So question for you is, do you prefer phone I- or camera while taking photos? Yes, ma'am. I prefer while taking a photo with my phone because it is easy to use and very easy access for me. Eh, Sorry, ma'am. First sentence is grammatically wrong. Abu, you have to directly answer. आपने बहुत लास्ट में जाकर बोला है. So I was also confused that you did not mention कि आपकी preference क्या है. ठीक है.
Please, I would Yes. prefer a camera or I would prefer a phone for special occasions because it Yes. produces a better quality of photos, right? Or you can say my Yes. phone is perfect for everyday photos. कैसे भी आप start कर सकते हो. Animesh, where have you been? Hello, ma'am. Hello, where have you been? The session is about to over in some time and now you're raising the hand. Why is it so? Because today's I'm literally off, You're literally what? literally off. Oh, is it? Why so? I'm feeling little more low because first of all, whenever I thought that I will speak, but most of the time I thought that I'm not the perfect one. No, you should not think like that. You should always feel positive that no, I will try, I will answer. No matter, I will make any errors. And ma'am is gonna correct you. Okay, ma'am. Okay, ma'am. You should Sorry for that. always try every question. Every. Okay? You should Yes, never ma'am. feel like that I cannot answer this question. What ideas I'm gonna generate? How will I speak? No. These sessions are for you all so that you all can practice. Otherwise, you know that we have already designed an application for you. You can practice over there. But the Yes, application ma'am. will not give you a feedback on each question. So these sessions are conducted so that you can have different idea generation and you can speak on any topic. Now, question for you is Animesh, do you share photos online? Um, First of all, I don't share photo online. Most of the time, whenever I have some photo, if that's a important and that's a very vital for my perspective or my any ambition, then I do share my photo online. Otherwise, I just keep it private because whenever you share everything through the online, there is a chance to mishandle those things. That's the concept. That's why I'm little more scary about those things. So, Animesh, you can say here that I'm quite selective, right? About what I post online. I only share photos that have a special meaning or that's an important occasion, that marks an important occasion because I value my privacy. I keep my photos private. ठीक है? Who is next? I can see only the repetitive names raising the hands. Jay Prakash, Jyoth, Muskan, Raza, Ramesh. Who wants to speak? Yes, ma'am. Good morning. Good morning, Jay Prakash. Question for you is, Yes, did you like taking photos as a child? absolutely. I checked a photo before 2 years. I actually like a photo because everywhere going to and take picture and save my memories. So after I think saw picture and remember before happened. Errors हैं जय प्रकाश. आपने 2 year बोला before 2 year. Yes, ma'am. So they are asking about your childhood. Did you like taking photos as a child? They're asking कि जब आप एक child थे क्या आपको तब भी photos लेना पसंद था? And my memorize बोला, so grammatical errors हैं इसमें, ठीक है? Yes, ma'am. So I enjoy taking photos when I was a child. It was fun for me. I like capturing happy moments with my family because होता है ना, like Yes, ma'am. when you are a child or when you see any child, they even enjoy taking photos, right? Next, Yes, who ma'am. wants to speak? Who did not even got a chance? Abhi, batao.
I heard a girl's voice who was saying that yes, I want to. Who was she? Mamta. Okay, Mamta, yes. Manisha, you missed. Sorry, I just checked the chat box. आपकी कोई भी class miss हुई है तो you can watch it on the YouTube and even on the application. ठीक है? Mamta, Yes. question for you. Yes, ma'am. Would you like to learn photography? Um, yes, according to me, I'm not found to learn about photography because as I'm not interested to learn photography, but sometimes I click some photos in my mobile phone, like some nature photos and as a family function. But Yes, नहीं continue. नहीं क्यों आता? ये क्यों बोलना है? हाँ, सॉरी मैम ठीक है. हाँ जी और एक चीज याद रखो, ममता, ट्राई टू स्पीक टेक फोटोज इंस्टेड ऑफ क्लिक फोटोज. ओके ठीक है? ओके हम अपनी वाली इंग्लिश में बोलते हैं, वी ऑफन से क्लिक फोटोज, बट हाँ जी इट्स ऑलवेज टेक फोटोज. ठीक है? ओके मैम कभी भी हम क्लिक नहीं बोलेंगे. वी विल टॉक अबाउट टेक फोटोज. हु कैन आंसर दिस? हु डिड नॉट? दीपक. Deepak, Yes. would you like to learn photography? Yes, I would like to learn photography because I really love to take photos of और nature. वो क्लास लगी हूँ तो अच्छा आ गया. Kirat, please mute yourself. Scenery. When I usually go in hiking, I prefer to click photos of trees and mountains, especially nature of green environments, and as well for a beautiful memory, I usually take photo, and for that things I want to learn photography for making better quality of videos. But not environments. It's environment. ठीक है? Okay. So please, जो भी थोड़े से आपके errors हैं, work on that. Who is left now? Who did not even got a chance to speak? Ma'am, before you leave the class, I have some questions to ask. No, abhi I'm not leaving, Kirat. Okay. Just wait. Anyone who wants to speak and he did not got a chance or she did not got a chance, please let me know. Muskan, Raina, Sandeep Kaur, Ankit. Yes, ma'am. Who said yes, ma'am? Yes, Sandeep. ma'am. हाँ, Sandeep. just stay in queue. Ankit, पहले संदीप का turn है. Okay, ma'am. Okay, so Sandeep, क्या क्वेश्चन पूछूं मैं संदीप से? संदीप, are you ready? Sandeep, where are you from? Yes, ma'am. Ma'am, I come from Pindarkara, district Moga. Punjab, right? Yes, ma'am. Acha, Sandeep, question for you is, do you think photos are better than videos? Why? I think videos are best for movement because we can see the every movement how to click how to make a video and with the actions, and we can easily learn from anything from video.
Okay. कैसा था संदीप का आंसर? सुना किसी ने या नहीं? जी मैम सुने हैं, हाँ. और ये अभी आपने कहा है कि क्लिक क्लिक नहीं बोलना, तो ये क्लिक बहुत यूज करते हैं। So she talked about better videos. I believe videos are more meaningful than photos. Instead of Okay. saying better or instead of saying it's of good quality, you can say more meaningful. Video, it captures the expression, the voices, the atmosphere. It actually make the memories more emotional, more vivid also. आपको बताना है कि क्यों वीडियोस बेटर है. अगर आपको लगता है वीडियोस बेटर है, वीडियोस क्यों बेटर है, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट रीजन. फॉर एग्जाम्पल, यू आर वॉचिंग अ वीडियो फ्रॉम अ बर्थडे पार्टी or you're watching a video of your family vacation, it makes you feel like you are experiencing that moment again. Right? Ankit? Yes, ma'am. You were on mute. Thought like that ma'am is not going to ask you a question. No, ma'am. Do ऐसी you बात तो नहीं है। enjoy looking at old photos? Yeah, ma'am. I was There's no enjoy. word like yeah, it's always yes. Okay? एक मिनट मैम, क्या बोल रहे हैं मैम? आपने समझ नहीं आया। या जैसा कोई वर्ड नहीं होता, it's always yes. Yes. Okay, ma'am. Okay? Yes. Yes, yes, I enjoy looking at my old photos because there are very beautiful moments in the moments captured in old photos. That's why I'm looking my old photos. Great. Anybody who can answer this? Uh, Who would like to try? It's up to you. I can try. Yes, please. So can you just see the question again? Do you enjoy looking at Do old you enjoy photos? looking at old photos? Definitely, I love watching my old pictures because it helps me to revitalize the memories that I have lived in the past with some of my friends who haven't been around with me now. And every time I look at the old pictures, I could experience those beautiful moments uh, and what else should I say? You can talk Um, about that whenever I look at those old photos, I can relive those precious moments instead of beautiful moments. ठीक है? okay. Looking at the old photos, they generally we have a sentimental value attached to it, right? Yeah. Okay, great. Now, as I said that I'm going to give you some vocabulary. Photography ki we have already given some phrases, right? Which you can use always. Sports is left. So when it comes to watching sports, you have to apply this every time. Okay? It's not that you will be just sticking to it कि हाँ मैम ने करा दी and you're not focusing. There are many. When it comes to watching sports, you can apply this. Playing sports, there are actually many. You can re-watch this session and you can apply it. Photography done. You can also talk about when taking a photos. So these will help you in all the part. जब आप cue card करोगे तब भी it's gonna help you. मैम अभी बर्थडेज वाला टॉपिक भी रह गया है ना? अभी तो बहुत सारे टॉपिक हैं. There are many topics. Um, ठीक है?
I have this question. Actually, I think I I booked my. want to give you some phrases also which you can use in any of your answer, in any, to start with. ठीक है? जब आपको ये नहीं समझ आता ना कि कैसे आप स्टार्ट करो, so these are the phrases which will help you in starting. Okay. ठीक है? Okay. Is this class about to end soon? Yes. Now you can ask your Okay. query, no problem. I had this question. Actually, I have my exam booked on August 3rd, Oh. like this upcoming Monday. Mm-hmm. And then I was like going through the cue cards, but actually, like when I did the IELTS academic, they give that booklet in which like they have these cue cards, like which the examiner has been asking Why recently. are you But just repeating the word like every time? Because it's gonna be habit now. ठीक okay, है? Yes. okay. So now I don't have that booklet, and I'm baffled that which cue cards they are gonna ask in the exam, because I don't have a specific thing like for which topics I should prepare for, and which is I don't know like what how to prepare for the cue cards. For the questions I can deal with that, but for the cue cards I think I need a little guidance. Kirat, it's, I guess, only tomorrow. Tomorrow may be a mock test day. I can just check once because day after tomorrow, maybe I'm going to start with a cue card. What I believe is you do not need any list of cue cards to prepare because we never know Yeah, which topic can come in the exam, right? yeah, So you just need to have that strategy. अगर आपके पास वो strategy है to plan your answer, you can speak on any topic. okay, Right? There are numbers of topic. I don't want to misguide you that I will say, Kirat, just practice only these topic 10, 15 or 20 and the question, the cue card will come from that. It is not. It is really not. I'm not that kind of teacher जो बोलते हैं ना कि सिर्फ ये कर लो इसमें से आ जाएगा. अरे नहीं आएगा. It's not sure. This is IELTS yeah, exam. We yeah. can It never happens expect this sometimes. I thing. know. I Yeah, always advise my student to have that strategy. अगर आपके पास वो strategy है, कोई मर्जी क्यू कार्ड आ जाए, you can plan your answer. Okay? yeah. I think at this moment I'm missing that strategy. Yes. So what you can do is, let me just check the schedule. Yes. So it's on 29. Tomorrow is Tuesday. Wednesday, Yeah, we will start with the Q card. So you have your exam on 3rd of August. The 3rd of August we will be continuing the Q cards for the 5 days. You know na that part 1 was 5 days. Now the yeah, part 2 of speaking will again be for 5 days. So till yeah. then you will prepare for the Q card. Okay? Okay. Thank you. Got it? So do not Ma'am, worry about it. Yes. ma'am, today I want to upload writing task in shopping session. Means that is only allow the writing, or I can upload the document. Hmm? You can just click the image. I believe it only allows you to have the image or the PDF. You check once. Okay. Because But when it's not showing. it's not showing you. It's Okay, let me just check once because once I correct and I check it, writing test you're talking about. yes, ma'am. These are the images. Kushal, what you can do is the image version is allowed, I believe. PDF, I'm not sure. Today Okay. I did Means not only got. I should capture the photo. Yes, you can. You can take a photo, you can upload it. Even if you're writing in a document, just take a picture. है ना? That's fine, ma'am. But it is not allowed to type on the screen like keypad. Not like that. No, the writing test by the teacher, it's always you have to upload the file. Okay. If you want to check it by a AI, then you can type and submit.
Okay. And even both part 1 and part 2. Yes, you can upload your task 1 and task 2 both. Today, It will be today evening, yes, ma'am. Today evening itself, I should want to upload, ma'am. When I will Yes. get all those feedback. Evening में if you're going to upload, it will be evaluated by tomorrow. You will get a feedback Oh. tomorrow. Depends. If you're going to upload before 5 maybe, then you will get a feedback right away by evening, approx 6 or 7 maybe. If I'll be available, I'm going to do it. If some other or else, it will be evaluated by tomorrow. Okay, If ma'am, there is a that's fine. writing test in the morning, then it will evaluate it the same day. But अगर आप evening late hours में करोगे upload, then maybe tomorrow. Yes, ma'am. Okay? Okay. मैम Yes, Harshit. मैम मैम मैंने पिछले साल मैम जून और जुलाई में मैम 2 बार टेस्ट दिया था आइल्स का। Okay. तो मैम जैसे कि उस मीम दोनों बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जब क्वेश्चंस का आंसर दिया था तो जैसे कि 3 टॉपिक्स या 4 टॉपिक्स में से वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैम लास्ट के 1 या 2 क्वेश्चंस में जैसे उसने क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने, फिर मैं उसका मैम आंसर कर रहा हूँ तो उसने बीच में ही काट के दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया और फिर वो भी काट दिया और बोला कि लेट्स स्विच टू अनदर टॉपिक। तो मैम ऐसा मेरे साथ दोनों एग्जाम में हुआ था, तो मैम इसकी क्या वजह हो सकती How was your score दोनों time? है? मैम आई स्कोर 6.5। हर्षित, अभी what the scenario is, let me tell you. अभी जो latest IELTS speaking का एग्जाम हुआ है, उसमें there is a same topic. Part 1 is about plants. Part 2 is also about plants, and part 3 is also about plants. Okay. So now if you're gonna give exam to me, like speaking test with an examiner, you will be facing the same thing. अगर part 1 reading है, part 2 भी reading है, part 3 भी reading है, so students will be revolving around only the same topic. So जैसे आज हमने फोटोग्राफी करा, फोटोग्राफी ही part 1 है, क्यू कार्ड भी बेस्ड होगा ओनली फोटोग्राफी, एंड द पार्ट 3 इज ऑल्सो अबाउट फोटोग्राफी, बट द क्वेश्चंस विल नॉट बी आंसरिंग आई वाली सिचुएशन, इट इज अबाउट पीपल वाली सिचुएशन। यस मैम। सो अभी जितने भी बच्चे अभी जो स्पीकिंग का टेस्ट दे रहे हैं विद अस, दे आर फॉलोइंग दिस फॉर्मेट। केतन इज नॉट प्रेजेंट मे बी टुडे, उसका शायद एग्जाम है आजकल में। अभी केतन ने भी लास्ट टेस्ट दिया है आई गेस फ्राइडे को, एंड ही वाज आल्सो आस्किंग मैम तीनों सेक्शंस में आपने सिर्फ और सिर्फ मुझसे रीडिंग पूछा, बिकॉज दिस इज द सिनेरियो गोइंग ऑन। Okay. अभी यही हुआ है स्पीकिंग एग्जाम। सो वी ऑल्सो ट्राई टू पुट ऑन द सेम थिंग कि जो एक्चुअल चल रहा है आईडीपी में, वी केम अप विद द सेम लेवल फॉर यू हियर। ठीक है, तो कभी कभी जब अगर देखो डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर, अगर उसे रिक्वायर्ड आंसर मिल रहा होगा, मे बी दैट्स व्हाई ही इज स्टॉपिंग यू एंड ही इज आस्किंग द अनदर क्वेश्चन। मैम उसने तो एक लाइन भी नहीं सुनी। No, उसको it will कहता not be सुनो। never like this. It will not be कि एक लाइन भी नहीं सुनी। एक लाइन भी कैसे नहीं सुनेगा? It's a recorded session. Recorded होता है पूरा speaking exam. अगर मैम नहीं सुनी दोनों होगी बार तो how मेरे he is साथ gonna give you 6.5? उनको ऐसे कहता मैंने पैसे दिए सुनने के लिए, सुनो। No, it's not like that. You score 6.5, that means you were giving the relevant answer. ठीक है, but the target is कि 6 or 6.5 is achievable. You should target for 7 and above. Yes, ठीक है, ma'am. My तो target is उसके लिए 7. यस, उसके लिए यू नीड टू डेवलप योर आंसर वेरी केयरफुली। जब आप डेवलपमेंट ऑफ आइडिया करते हो, प्लीज उस पर वर्क करो सो दैट यू कैन एक्सपैंड। कोई भी आंसर आपका अंडर डेवलप नहीं रहना चाहिए, कोई भी आंसर। पार्ट 1 is मैम literally about you. Start practicing for this. Yes, Kirat. मैम एक लास्ट क्वेश्चन, I'm मैम एक worried लास्ट। about my writing Just exam. 1 minute. Yes, Kirat. I'm worried about my writing exam because I think I don't have enough practice. So, And Kirat, what you can do is, please, as Kushal has mentioned already, you can upload your writing task 1 and task 2. I'm going to evaluate myself, and we can also talk about it during the session, by the end of the session. Okay? okay, Because okay. what I do is, whenever I see a name of my student who has uploaded the writing, I try to check it personally. I mentioned this before also. The students who are here, who are attending the classes regularly, I check it Yeah. personally. Okay? Okay, मैम ma'am. एक लास्ट क्वेश्चन Yes, और है। yes, Harshit, yes.
मैम मैं स्पीकिंग का वॉइस अपना रिकॉर्ड करता हूँ, तो मैम मेरा साउंड मैम रोबोटिक जैसा आता है, तो मैम वो एक फ्लुएंसी कैसे आएगी मैम? रोबोटिक तो नहीं आता हर्षित। रोबोटिक मीन्स व्हेन यू आर स्पीकिंग एट अ फ्लैट इंटोनेशन, वैसा नहीं होता। इट इज दैट यू नीड टू स्पीक अप एंड डाउन ऑफ योर पिच। अगर आपका पिच जो है वो अप एंड डाउन शो करता है, देन इट इज अ गुड इंटोनेशन। नाउ हैव यू सीन मी स्पीकिंग विद अ फ्लैट इंटोनेशन एवरी टाइम? नो मैम। Sometimes my pitch is low, sometimes my pitch is high. So that is what the correct intonation is. And when you want to speak, अब मैं ऐसे बोलूं, do you enjoy outdoor games? And then I stop. So my intonation is going wrong. वो कब होता है आपके साथ? जब आप आइडिया जनरेट कर रहे होते हो, आप स्टॉप हो जाते हो कि नहीं अब तो खत्म हो गया आंसर. So that is a wrong intonation. रोबोटिक तब होता है जब आपने कुछ लर्न कर रखा हो और आप वही बोलते जा रहे हो. So it feels like you have memorized the answer. That is why you're sounding like robotic. जैसे robots बात करते हैं, right? Yes मैम. So मैम it's about intonation. Yes, it's about intonation. It's about fluency also, and it's about intonation, right? Okay. So please do not get, मतलब किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए that we are actually getting fear of speaking. Speaking is not a fear. वो तब तक आपको लगता है जब तक आप बोलते नहीं हो. जब आप बोलना स्टार्ट करोगे, इट इज वेरी स्कोरिंग. आई वुड से कुछ लर्न करने की नहीं है. रीडिंग में आपको बहुत सारा, मतलब यू नीड टू यूज अ लॉट ऑफ ब्रेन टू फाइंड दोस कीवर्ड्स, फिर आपको जाके आंसर मिलेंगे. राइटिंग में भी यू नीड टू जनरेट योर आइडियाज अ लॉट, देन यू नीड टू वर्क एंड देन यू नीड टू राइट. स्पीकिंग तो इनफॉर्मल है. इफ यू अप्लाई दिस सिंपल फॉर्मूला, अगर आप AEE को अप्लाई करते हो, आई बिलीव सिंपल बोलो, कॉन्टिन्यू बोलो. कोई डिड आई गिव यू एनी फैंसी वोकैबुलरी जो आपने कभी भी ना पढ़ी हो? मैंने कभी भी आपको ऐसी No. वोकैबुलरी दी कि आपको लगा अरे ये मैम ने कौन सा वर्ड दिया, ये तो मैंने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं. सो वी ऑलवेज गिव यू द नेचुरल फ्रेजेस, क्योंकि आपको कोई फैंसी वर्ड का नीड नहीं है टू स्कोर 7 एंड अबव. बट Okay. यू हैव टू यूज इट इन द राइट कॉन्टेक्स्ट. जब आप सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो, मेक श्योर कि आप उसे अप्लाई करो. ठीक है? सो जस्ट री वॉच दिस सेशन एंड अप्लाई इट. ओके? Okay. यस. Yes मैम. यस जयप्रकाश. यस मैम. हम्म. मैं जब भी क्वेश्चन करता हूँ तो उसमें लिखता है कि शॉर्ट आंसर दे रहे हैं आप. हाँ. उसके लिए क्या करना होगा मैम? तो दैट इज व्हाट जो मैंने आपको मेथड कराया कि आपको एक्सपैंड करना है अपने आंसर को. इसका मतलब आपका आंसर शॉर्ट है. यू नीड टू स्पीक मोर. So that is what यस you मैम. can do is कल हम always directly answer the question, add extra detail, add a reason why you like this. अगर स्पोर्ट्स पसंद है, क्यों पसंद है, रीजन बताओ. रीजन के बाद उसमें मैम एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करो. यस. मैम मैंने चैट में देखना एक लेट मी जस्ट what I can do for learn fast and easy grammar. Grammar से practice से आती है. You have to do a मैम lot of practice. यू इस पे है मैम बेबी कोड पे. हाँ, there are grammar sessions. तो maybe yes, grammar classes में जाके चेक करो. Basic grammar है वहां पर. ठीक है? ओके मैम. You can. यस मैम. मतलब what you can do is, देखो स्पीकिंग ऐसी है, जब आप रोज बोलोगे तो आपकी ग्रामर कहीं ना कहीं से करेक्ट होती है ना? सिंपल इंग्लिश की कोई ना कोई बुक्स में प्रैक्टिस करो, ग्रामर प्रैक्टिसेस करो, सेशंस देखो उसमें क्या क्या दे रखा है. ग्रामर की मिस्टेक्स को नोटिस करो, नोटबुक बनाओ अपनी एक. अगर आप आई बिलीव 20 to 30 मिनट्स एवरी डे प्रैक्टिस करते हो कंसिस्टेंटली, देन आपकी ग्रामर बहुत जल्दी इंप्रूव हो सकती है. बट डोंट मेमोराइज ऑल द रूल्स. मेमोराइज नहीं करना रूल्स को, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे. एक टॉपिक पे एक वीक वर्क करो, उसे स्पीकिंग में भी करो, राइटिंग में भी अप्लाई करो, और फिर अपनी मिस्टेक्स को चेक करो कि क्या क्या मिस्टेक करी आप. ठीक है? गॉट इट अंकित? यस मैम. Oh, great. Anybody else? कोई डाउट, कोई क्वेरी? Yes, ma'am. I have a question. Yes, Aryan. Ma'am, like whenever I try to speak in part one, so like मैम जब हम लाइव होते हैं, कैमरा ऑन होता है या सामने होते हैं, तो जब हमको क्वेश्चन आंसर अपना लाइक एंड करना है, सो हम बोल देते हैं या फिर हम गर्दन लाते हैं या सो लगता है. बट whenever I speak like in audio, so
वो पता नहीं चल पाता कि कब खत्म करना है। आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने खत्म कर दिया है? अंकित देखो, इसीलिए मैंने आपको क्यों दिया है ये रूल क्यों दिया है, इसीलिए दिया है ताकि आपको पता हो कि फर्स्ट लाइन में मैंने डायरेक्टली बता दिया मुझे क्या पसंद है। मुझे फोटोग्राफ्स लेना पसंद है, मैंने बताया यस आई लाइक। सेकेंड सेंटेंस में आपने उसे एक्सप्लेन करा। थर्ड जब आप एग्जाम्पल खत्म करोगे और डन विद पार्ट 1, इससे ज्यादा आपको बोलना ही नहीं है। एग्जामिनर को वो रीजन भी पता लग गया आपका कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, क्यों पसंद है वो भी पता चल गया। आपने एग्जाम्पल से उसे क्लियरली जस्टिफाई भी कर दिया। इससे ज्यादा आपको बोलने की नीड ही नहीं है। ओके मैम, ओके, गॉट इट। ऑलवेज प्लान योर आंसर विद दिस स्ट्रैटेजी। कभी भी रेपिटेशन नहीं आएगा, कभी भी नहीं। 4 सेंटेंसेस भी अगर इस स्ट्रैटेजी से बोल दिए, मोर देन इनफ। ओके। ओके मैम। यस, इन्फिनिक्स स्मार्ट 6, व्हाट्स योर नेम? मैम वो मैं नहीं था, किसी और ने पूछा था मैम, कुछ नहीं। नो नो, इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 ने हैंड रेज करा है। हर्षित, अगर ऐसा है तो 1 मंथ भी प्रैक्टिस करोगे, यू विल बी ऑन द सेम लेवल। ओके मैम। मैम मेरे को लगता है मैम मैं कभी कभी 7 भी टच कर सकता था मैम, तब 2 मंथ्स पहले, बट मैम मेरा कुछ कारण से मैम प्रैक्टिस छूट गया था। एज आई टोल्ड यू, देखो क्लियर स्ट्रक्चर जब आपका रहेगा ना स्पीकिंग में, लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज हो जाते हैं जब हम इस स्ट्रक्चर को खोलते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई रखो, योर टोन शुड बी काम व्हेन यू स्पीक। यू कैन क्रैक पार्ट 1। पार्ट 1 को स्ट्रॉन्ग कर लो, इट्स ओनली 1 डे। कल मैं स्पीकिंग मॉक टेस्ट लेने वाली हूँ, पार्ट 1 का मॉक टेस्ट। ठीक है, पार्ट 1 मॉक टेस्ट के बाद हम द वेरी नेक्स्ट डे, मतलब वेडनेसडे ऑनवर्ड्स, हम कर रहे हैं क्यू कार्ड। ठीक है, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, बैंड 7 कोई लक वक से नहीं आता है। ये स्ट्रक्चर जो स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, सिर्फ उन्हीं का आ पाता है। और वो कोई बहुत अलग नहीं होते हैं, वो सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं, दे टारगेट ये आना ही आना है। कुशल has already achieved band 7 when he was giving test to me. So you need to plan yourself. ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, कॉन्फिडेंस से आपका बैंड 7 ऑटोमेटिकली आ जाए। ठीक है, यस मैम, यस गुड मैम, टू गो। एनी न्यू यस मैम, स्टूडेंट, थैंक अगर किसी ने हमें आज ज्वाइन करा है, प्लीज क्लिक ऑन द रिमाइंड मी बटन फॉर ऑल ऑफ द नेक्स्ट क्लासेस। आई गेस 8th और 9th अगस्त तक की सारी क्लासेस शेड्यूल है एप्लीकेशन में। आप उनको क्लिक करके रखो सो दैट यू डू नॉट मिस आउट एनी क्लास। और अगर किसी की कोई क्लास मिस भी होती है, द सेम डे क्लास विल बी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब एंड इवन ऑन द एप्लीकेशन। आपका आज का जो सेशन था, इट वॉज अबाउट एंटरटेनमेंट, फोटोग्राफी एंड स्पोर्ट्स। सो सेम टॉपिक आपको एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। यूट्यूब में जो प्लेलिस्ट है, दिस इज बैच कोर्स 4। तो बेबी कोड के चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, जो आपका करंट कोर्स चल रहा है वहां पर भी आप सारे सेशंस को देख सकते हो। एंड वीजा सर्विसेज के लिए अगर अभी कोई अप्लाई कर रहा हो, तो मे बी इट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1st of August। आप तब अप्लाई कर सकते हो। कोई डाउट, कोई क्वेरी है, दे विल हेल्प यू आउट। एंड जस्ट लेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली नो दैट वी आर बिगनिंग विद स्पीकिंग पार्ट 2 नाउ। जिसको भी प्रैक्टिस करनी है, दे कैन बिगिन। डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस पार्ट 1 फ्रॉम द एप्लीकेशन। ठीक है, प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, बिकॉज स्पीकिंग इज समथिंग विच कम्स ओनली विद प्रैक्टिस। जब आप डे टू डे बोलोगे, एंगेज करोगे खुद को इन द स्पीकिंग, ओनली देन यू कैन इम्प्रूव। बिहाइंड द कैमरा यू कैन नॉट इम्प्रूव। ओके, सी यू ऑल टुमारो देन। बाय बाय, थैंक टेक यू मैम। केयर, बाय Okay, बाय। ma'am. Bye-bye, ma'am. थैंक यू मैम।